इस वीडियो में समझेंगे द बेस्ट बुक समरी ऑफ द क्लासिक ऑन टाइम बेस्टसेलर Ikigai, the Japanese way of living a long and a prosperous life, written by Hector and Francis. Let's start this particular summary. ओकिनावा करके एक छोटा सा आइलैंड है in the south of Japan, जहाँ पे एक रिसर्च की गई थी and they found out that out of 1 lakh people, almost 25 people are crossing the age of 100. और इसका रीजन क्या है दोस्तों? टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ वी यूज लॉट ऑफ कॉमन सेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप अच्छी तरह से खाइए, आपकी सेहत का ध्यान रखिए, यू हैव गुड फ्रेंडशिप्स, यू डोंट हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. ये तो कॉमन सेंस है, बट क्या ये सीक्रेट एसेंस which gives this long and happy and prosperous life is connected to this concept called Ikigai? Let's understand in detail what is the concept of Ikigai and what is your Ikigai. Ikigai 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है. What you are good at, what you love to do, what the world needs and what you are getting paid for. अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो Ikigai नहीं बनेगा आपका. So let's understand what is the first part. The first circle is what you love. जो चीज आपको करना पसंद है, that's the first circle over here. The second circle is what you are good at. जो चीजें आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो, that's your second circle. The third circle is what you are getting paid for. लोग आपको किसके लिए पैसा दे रहे हैं, that's the third circle. And what's the fourth circle? What the world needs. दुनिया को किसकी जरूरत है. ये चारों सर्कल्स को कंबाइन करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज योर इकिगाई. अगर फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल को कंबाइन करेंगे, दैट मींस व्हाट यू आर लविंग टू डू एंड व्हाट यू आर गुड एट, दैट बिकम्स योर पैशन. अगर सेकंड सर्कल को और थर्ड सर्कल को कंबाइन करेंगे, दैट मींस व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट द वर्ल्ड पेज यू, that becomes your profession. अगर third circle और fourth circle को combine करेंगे, that means what the world needs and what you're getting the money for, you get your vocation. और अगर first circle और fourth circle को combine करेंगे, that means what you love to do and what the world needs, that becomes your mission. Well, everyone has an ikigai. सिर्फ अफसोस ये चीज़ की होती है कि कुछ लोगों ने अपनी इकिगाई को समझा है, जाना है and then living it. And some people are not just even aware of this particular concept, but this video can get you the awareness कि yes, there is something called as an ikigai और मैं मेरा ikigai ढूंढ सकता हूँ and I can live a happy and a prosperous life. एक टेस्ट क्या है कि whether I am living my ikigai, well, that feeling of fulfillment, that accomplishment, that peace of mind at the end of the day, अगर ऐसी फीलिंग अगर आपको आती है, that means you are really living your ikigai. See, understand this. Where your why is very clear in why you are doing what you are doing, तो फिर जो भी how हो ना, वो you can face that particular how. You can endure any of the hows कि कैसे होगा, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, all that can be taken care of. आपको पहले अपना why समझना है. साइमन सिनेक बोलते हैं start with why, और अगर आपको साइमन सिनेक की क्लासिक बेस्टसेलर start with why की अगर आपको समरी चाहिए, then please comment in the comment box. Very soon I will bring this on my YouTube channel also. But wait, क्या सिर्फ लंबी उम्र जीना ये इकिगाई? No, I don't think so that. I mean, it's not about living longer. The more important thing is living better. Yes, living longer तो automatically आ जाएगा if you are living better in life. I'll use some classic examples over here who have lived their purpose of their life, and that is where you can get inspired by these examples. Warren Buffett, Ratan Tata, Lata Mangeshkar, Nelson Mandela, Mother Teresa, you name it, I can keep on giving these names. These people are actually living their purpose. They have actually lived their ikigai, and that's where they are different. They are in the top 1% success bracket. लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है इस जमाने में, इस कलयुग में. दिस वर्ड कॉल एज स्ट्रेस. ये स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है कि नाउअडेज हम बच्चों को भी बोलते हैं कि आप अपना वर्ड यूज कर रहे हैं कि आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस. अरे मेरी एग्जाम्स चल रही है, आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द स्ट्रेस? थोड़ा मेडिकल साइंस से समझते हैं सो दैट वी कैन रियली अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस कैसे ना आए हमारी जिंदगी में एंड वी कैन लिव द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. वी कैन गेट आवर इकिगाई एंड लिव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ. तो चलिए समझते हैं. जब भी स्ट्रेस आता है तो क्या होता है? These 6 steps starts to happen. Number first step, the outside stimulus activates the neurons in our pituitary gland. Second step में क्या होता है? Some hormones are produced which release corticotropin. Third step क्या है? This circulates throughout our body via the sympathetic nervous system. Fourth step, the adrenal gland is triggered to release adrenaline and cortisol. अब देखिए फिफ्थ स्टेप में क्या होता है. एड्रेनल रेजेस आवर रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स
and prepares our muscle for action, getting our body ready to react to perceived danger. और आखिरी स्टेप, 6 स्टेप में क्या होता है? Cortisol increases the release of dopamine and blood glucose, which gets up charged up and allows us to face these challenges. ये 6 steps आपके body में इतनी fast reaction होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, and that's where you start to build up the stress. Now to compare this situation के modern life हमारी जिंदगी की एज कैसे कम कर रही है, let's compare each and every part of this particular stress and then we compare ourselves with our cave dwellers. In 6,000 years के पहले, how did human beings start to live in the caves? और आज क्या फर्क है and what is the impact of that on our stress levels? Cave dwellers felt the stress in very specific situations. और आज की तारीख में we are all the time 24/7 all the time alert कि कोई notification आ गया, कोई ping आ गया, कोई zing आ गया, कोई alert आ गया, कोई beep आ गया, कोई alarm बज गया. उस समय the threats were real. A predator can actually kill their life like शेर आ गया, वो मार देगा, अपनी जान ले लेगा. So it was real threat. लेकिन इस समय वो एक अलार्म बजता है, वो एक नोटिफिकेशन बजता है, वो दिन में भी 5-7 नोटिफिकेशन साथ में आ गए. अरे कुछ डेंजरस हो गया, कोई मुझे अर्जेंसी पुकारना है. तो ये नॉर्मल सी चीज हो गई है टू हैव दिस काइंड ऑफ अ थ्रेट. पहले ज़माने में जब ये स्ट्रेस ऐसे लगातार नहीं आता था, तभी हमारे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल्स वो एक्चुअली एट अ पर्टिकुलर लेवल इंटरवल्स में बढ़ते थे, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. अब क्या होता है, अभी तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस लेवल्स पूरे दिन होता है. सुबह 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 8 बजे, रात को 10 बजे चलता ही रहता है पूरे दिन. दैट रियली किल्स आवर हेल्थ, किल्स आवर बॉडी. That is the difference between what we are living our life right now in this sort of stress and what our ancestors used to live. I'm going back to the civilization 6,000 years की पहले की बात compare कर रहा हूँ. But you will say, Sidharth, ये कलयुग में कैसे मैं stress को कम करूँ? How can I reduce my stress? बहुत सारे तरीके हैं. One of the best ways to do is practice meditation. I would highly recommend Vipassana. वो कैसे करना? I am given a 10-minute Anapana meditation also as a tribute to my mentor Guruji. But doing some mindfulness exercise throughout the day is the best way to reduce your stress. मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा. छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत better results मिलेंगे in a very short span of time. पहला, walk for at least 20 minutes a day. बस 20 मिनट वॉक करिए, that's it. Walking is considered the best exercise. Start doing this. This is the first one. Number 2, use your feet instead of an elevator. Number 3, participate in social or leisure activities. अपने friends, अपने family members, their associates, अपने colleagues के साथ में. Number 4, replace junk food with healthy food. Difficult है. Tasty food is not equal to healthy food. Yeah, that's a difference between tasty food and healthy food. So replace junk food with healthy food. Number 5, get the right amount of sleep. हम अभी सोते ही नहीं है, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, but at least 6 hours, 7 hours, 8 hours depending upon your body cycle. At least sleep peaceful, deep sleep. That's very, very important. Number 6, play with your children. Play a sport. Play with the kids, and that's when you really start to get that young. Or number 7, be conscious of your daily routine. के मैं पूरे दिन में मैं क्या rituals कर रहा हूँ, कितना समय मैं मेरे लिए दे रहा हूँ, कितना समय मैं काम के लिए दे रहा हूँ. That's when you start to develop these 7 beautiful tips to get your results. छोटे छोटे tips है, whether you give maximum results. This is what mentioned in Ikigai. Now the most important concept जो ये बुक में बताया गया है is a concept which we call as the flow state. और the flow state concept बहुत famous किया गया by this famous psychologist मिहाई चिक्सन-मिहाई. और हम डिटेल में इसको समझेंगे कि कैसे आप अपने फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो. ये बताया गया है इन दिस बुक Ikigai. What is flow? Flow is the pleasure, that creativity, that deep sense of fulfillment. जब ये आप कोई काम कर रहे हो, हमें महसूस ही नहीं होता आप काम कर रहे हैं. That's where you are called in a complete flow state. Nothing else matters. People are just enjoying it and they can keep on doing in the work in their flow state. For example, आपने कभी देखा होगा where people like scientists, like inventors, like painters. Sometimes even when I start to work, I don't look at the time. और time मुझे लगता है कि कहाँ time निकल गया, because I'm just enjoying the work. That is experiencing your flow state. और अगर समझो कि काम आपको पसंद नहीं है, तो वो 2-3-4 घंटे भी इतने परेशान लगेंगे. You are not in the flow state. यहाँ पे मैं आइंस्टाइन की बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी देना चाहता हूँ. आइंस्टाइन सेड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी यूजिंग दिस फ्लो स्टेट कॉन्सेप्ट. उन्होंने क्या बताया? If you touch a hot stove for even 10 seconds, it feels really क्या बहुत टाइम हो गया यार, निकाल हाथ चल रहा है.
And now look at yourself. If you are sitting with a pretty girl, maybe the dream love of your life, और 2-4 घंटे कहाँ निकल गए और आपको वो टाइम कम लगेगा कि यार 1 ही मिनट तो हुई है. That is relativity. Now, what are the 7 conditions which are mentioned in the book to achieve the flow state? Number 1, knowing what to do. Number 2, knowing how to do it. Number 3, knowing how where you are doing it. Number 4, knowing where to go. Number 5, perceiving significant challenges. Number 6, perceiving significant skills. और नंबर 7, being free from distractions. ये 7 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे टू अचीव द इकिगाई स्टेट. यहाँ पे ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन दिया है कि क्या हमें सिंगल टास्किंग करनी है कि मल्टीटास्किंग करनी है. लोग अक्सर ये समझते हैं कि इफ आई स्टार्ट टू डू मल्टीटास्किंग मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. गलत जवाब. और यहाँ बेहतरीन रूप से डिस्टिंक्शन दिए गए वेयर यू रियली अंडरस्टैंड कि सिंगल टास्किंग इज द ओनली वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. मल्टीटास्किंग इज अ चीट. तो चलिए समझते व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस ऑफ सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग. नंबर 1, अगर आप सिंगल टास्क करते हो दैट मीन्स आप एक ही चीज एक ही बार फोकस करेंगे तो आपको फ्लो स्टेट अचीव करना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है. और अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर फ्लो स्टेट. नंबर 2, सिंगल टास्किंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है. मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी घटाती है. नंबर 3, सिंगल टास्किंग से आप चीजों को अच्छी तरह से याद रख सकते हो, मल्टीटास्किंग से आप जल्दी चीजें भूल जाएंगे. नंबर 4, सिंगल टास्किंग करने के टाइम आप गलतियां कम करेंगे, मल्टीटास्किंग करने के टाइम आप गलतियां ज्यादा करेंगे. नंबर 5, सिंगल टास्किंग से वी आर ऑलवेज कूल एंड काम एंड इन कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क. मल्टीटास्किंग जब आप करते हो तो वो टास्क आपको कंट्रोल करता है. यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सेल्फ. नंबर 6, सिंगल टास्किंग इंक्रीजेस योर क्रिएटिविटी. मल्टीटास्किंग किल्स योर क्रिएटिविटी. कोई भी अच्छे क्रिएटिव पर्सन को देख लेना, उसने कभी मल्टीटास्किंग करने के टाइम एक बल्ब ऑन मोमेंट, एक अच्छा आइडिया नहीं निकाला होगा. यू नेम इट न्यूटन, यू नेम इट स्टीव जॉब्स हु बिल्ड दैट आईफोन. उनको आइडिया कहाँ पे आया? व्हेन ही वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वन सिंगल टास्क. What about thinking कि यार ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करो, वहाँ पे आपको आइडियाज नहीं आएंगे. और फाइनली ऑथर एंड करते हैं कि what are the advantages of the flow state and what are the disadvantages of not being in the flow state. When you are in the flow state, you have a focused mind. When you are not in the flow state, you have a wandering mind. Number 2, when you are in the flow state, you are living in the present. When you are not in the flow state, you are either in the future or in the past. आप present में नहीं जीते हो. That's the real problem over there. Number 3, when we are in the flow state, we are free from worry. When we are not in the flow state, we always have tension, doubt, fear, worry, anxiety. Number 4, in the flow state, the hours fly by. In the non-flow state, every minute is a pain. Number 5, in the flow state, we are in control. When we are not in the flow state, we are not in control, complete chaos. Number 6, when we are in the flow state, we act after preparation. Whereas in the non-flow state, we act without preparation, we are just reacting, we are not responding. Number 7, in the flow state, we know exactly हमें हर समय क्या करना है. Whereas when we are not in the flow state, we get confused, बीच में अटक जाते हैं, अब क्या करूँ, कहाँ से कहाँ रास्ता निकालूँ. We are stuck up over there when we are not in the flow state. Number 8, in the flow state, we are widely clear. There is no doubt, fear, worry, anxiety. When we are not in the flow state, complete doubt, low self-esteem, and lack of pride. That's what happens when we are not in the flow state. Number 9, flow state is pleasant. Whereas in the non-flow state, it's boring, it's tiring, it's exhausting. Number 10, in the flow state, the ego fades, the work takes over, work preference is like मैंने क्या नहीं किया. Whereas in the non-flow state, ego comes and that ego starts to create that pressure कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ अच्छी करनी है. That really kills our creativity, that kills our productivity. ये flow state को आपको समझना है. And when you start to live in this flow state, every second of your life you're living a better life, but every second becomes a minute, that minute becomes an hour, that hour becomes a day becomes a week becomes a month becomes a year, and a year becomes a lifetime. That is where you can live longer, you can live better, you can live your purpose. You're in the flow state without any stress. You are on the track to live your Ikigai. When your passion plus your profession plus your vocation plus your vision are combined together in this flow state, you are on track to live your Ikigai. Has this video helped you to discover your Ikigai? क्या आपको ये वीडियो पसंद आया?
If yes, please like this particular video, share this particular video, subscribe to our channel और also comment in the comment box कि और कैसे आपकी book summaries हम और बना सकते हो, so that you can really start to get more and more value out of every video which you're giving over here. Thank you so much. I wish that you discover your Ikigai. Read this book, apply these principles, watch this video once again, and be on track to discover your Ikigai. I'm Sidharth Shah. Let's get ready to think and grow rich.